Are we live now? Good afternoon, everyone. Welcome to another show of CxO Talk. Today we have Dr. Iffat Zafar Aga from Sehat Kahani. She's working as a co-founder and COO at Sehat Kahani. Welcome to the show, Dr. Iffat Zafar. How are you doing? I'm good. I'm good. How are you? Can you hear me? Dr. Iffat, can you hear me properly? I can. Can you? Yes, I can. I think there's a little lag, but I So, think we should be able to work out. Yeah. definitely there is a lag in the connection. I would like to know from you about your journey so far. So I'm a medical doctor. I did my medicine from Ziauddin, and I've done my MSc in global e-health from University of Edinburgh. I got Commonwealth scholarship for it. But I think ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया कि I created a digital healthcare organization सेहत कहानी with my partner Dr. Sara Saeed Khurram, and क्योंकि वो public health की एक journey थी, so I was able to get the scholarship, get into the university, and I think मेरा ज़्यादा काम public health and digital health related ही रहा है in the last few months, years. Right, right. There is too much lag in this conversation. I hope it get better after some time. Yeah. So, how would you define your role at Sehat Kahani? So I'm one of the founders. We are two founders. It's me and it's my partner Sara. We both created Sehat Kahani in 2017. It has been a really exciting journey creating that organization. And she's the CEO. I'm the chief operations officer. And when you're the founder, आपके role में हर चीज आती है. So आप ना you know आप ना सिर्फ फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, you're involved in the day-to-day operations. You're also looking at how you're scaling the organization, creating strategic development and building business plans, business models, applying for funding. But साथ साथ जब आप फाउंडर होते हैं तो आप हर छोटी से छोटी चीज़ भी कंपनी की कर रहे होते हैं. सो अगर वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, किचन में कोई इशू है, आपको ऑफिस बनाना है, तो इन छोटे इश्यूज में भी बीइंग द फाउंडर आप इन्वॉल्व होते हैं. सो आई थिंक दिस इज हाउ आवर रोल डिफाइंस. कहने को मैं ऑपरेशंस ऑफिसर हूँ, बट आई थिंक मी एंड सारा वी look at most of the things that happen in the organization. If there is too much lag in this conversation. I think there is, yeah, because can you hear me now? Yes, I can hear you properly. Yeah. We can just hope and wish it gets better with the conversation. What is Sehat? Sehat Kahani is a digital From where the healthcare. journey started? How would you Yeah. Kahani? Yeah. So, Sehat Kahani is a digital healthcare platform. We empower physicians, particularly female physicians, to optimize their medical practice through a digital platform. हम ये 3 तरीके से करते हैं. फॉर द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस हम नर्स असिस्टेड टेलीमेडिसिन क्लिनिक्स बनाते हैं ताकि लोग उस क्लिनिक में आ सकें और एक डॉक्टर को दिखा सकें. नर्स वहाँ पे मौजूद होती हैं एंड द डॉक्टर्स आर ऑनलाइन, क्योंकि हम समझते हैं कि कम्युनिटीज़ में लोगों की अवेयरनेस और लोगों का ट्रस्ट फैक्टर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी भी मुश्किल होता है, इसलिए वो एक नर्स का होना ज़रूरी होता है. बाकी फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, वी हैव अ मोबाइल ऐप. सो उस मोबाइल ऐप के ज़रिए आप एक डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं. आप चैट, ऑडियो, वीडियो कंसल्टेशन करके प्रिस्क्रिप्शन हासिल कर सकते हैं. और इसमें हमारे 2 वर्टिकल्स हैं, एक कंज्यूमर ऐप है, एक कॉर्पोरेट ऐप है. सो अच्छी चीज़ ये है कि टुडे एट दिस पॉइंट अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स वर्क विद अस. अराउंड 700 प्लस कॉर्पोरेट्स हैव नाउ एक्सेस टू सेहत कहानी सर्विसेज. सो दिस इज़ व्हाट वी डू. कहानी कैसे शुरू हुई? आई थिंक बोथ मी एंड सारा, वी बोथ आर डॉक्टर्स, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इन आवर लाइव्स वी हैड टू
choose between having a career or having a family. और मुझे ऐसा लगता है कि ये चॉइस, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप एक ना सिर्फ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकें या जिस भी आप शोबे में काम करते हैं आप काम कर सकें, और साथ साथ आप जो है फैमिली रन कर सकें। सो दिस इज़ हाउ सेहत कहानी स्टार्टेड। वी बोथ बीइंग फीमेल्स at one point in our time had to choose between either having a career or having a family, and यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई कि हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं लोगों के लिए टू क्रिएट हेल्थ केयर एक्सेस। एक चीज़ और जो आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि इन पाकिस्तान मेजॉरिटी ऑफ द फिजिशियंस नेटवर्क इज़ बेस्ड आउट ऑफ फीमेल फिजिशियंस। सो एक बहुत बड़ी तादाद फीमेल डॉक्टर्स की होती है जो बहुत सारी सोशल और कल्चरल रीजंस की वजह से काम नहीं कर पाते। और दूसरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है मेल डॉक्टर्स का, जो कि मुल्क छोड़कर चले जाते हैं for better work opportunities. And I think how the situation is happening in the last few months in Pakistan, this number is unfortunately growing. So, that's where we felt the use of digitization and technology, how it can add so much more value in enhancing healthcare access. And that's how Sayed Khani started. इस वक्त हम कहाँ हैं? इस वक्त हम 3 तरह के मॉडल्स चलाते हैं। हमारा एक क्लिनिकल मॉडल है जिसमें हम देही इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में नर्स असिस्टेड ई हेल्थ क्लिनिक्स बनाते हैं। सो इट्स लाइक एनी अदर रेगुलर क्लिनिक जहाँ पे क्लिनिकल फैसिलिटी है, वहाँ पे एक नर्स मौजूद होती है, तो पेशेंट्स कैन वॉक इन एंड द नर्स facilitates consultation with online doctors. सिमिलरली हमारी जो इस वक्त एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के 2 वर्टिकल्स हैं। हमारा एक कंज्यूमर वर्टिकल है और एक कॉर्पोरेट वर्टिकल है। कंज्यूमर वर्टिकल मास मार्केट के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग भी जाएँ प्ले स्टोर पे, आपको डाउनलोड करें और एक डॉक्टर से कन्वर्सेशन करें। कॉर्पोरेट वर्टिकल हमारा कॉर्पोरेट्स के लिए अवेलेबल होता है, सो वो लोग जो किसी कॉर्पोरेट वैल्यू चेन से एसोसिएटेड हैं, वो और उनकी फैमिलीज़ अनलिमिटेड कंसल्टेशंस एक्सेस कर सकती हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ इन अ क्रक्स जो हम करते हैं। आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि वी हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली। सो इस वक्त तकरीबन 62 ई हेल्थ क्लिनिक्स हैं हमारे नेशन वाइड। हमारी 1.4 मिलियन डाउनलोड्स हैं कंज्यूमर ऐप की, और कॉर्पोरेट्स इस वक्त 700 प्लस कॉर्पोरेट्स हमारी ये सर्विस इस्तेमाल कर रही हैं। सो आई थिंक इट हैज़ बीन अ रियली एक्साइटिंग जर्नी। या That's remarkable. That's remarkable. Wish you more success in future, and I hope that bringing that great impact in Pakistan. So, what is the future of such digital healthcare startups in Pakistan? Yeah, I think the future was supposed to be really bright, but I think कुछ last few months में कुछ ज़ाहिर challenges से गुजर रहा है हमारा मुल्क, but I think I'm still very hopeful, very positive. Particularly health में मुझे लगता है कि इतने gaps हैं कि काम करने का बहुत margin है. There is a lot of room to do a lot of work. और जिस तरह से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज यू ऑल नो 64% ऑफ आर पॉपुलेशन इज बेस्ड इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। बट एज डिजिटाइजेशन इज ग्रोइंग, एक्सेस टू इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि उन सारे लोगों को हेल्थ केयर का एक्सेस दिया जा सके। आई थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। दुनिया एआई की तरफ जा रही है, दुनिया मशीन लर्निंग की तरफ जा रही है। आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम दैट पाकिस्तान एज अ कंट्री इन्वेस्ट्स मोर इन क्रिएटिंग मोर एंड मोर डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़। आई थिंक ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है हमारी अच्छे टैलेंट को पाकिस्तान में रोकने के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। वरना आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम थोड़े अर्से में देखने वाले हैं वो ये है कि बहुत अच्छा टैलेंट हम लूज़ करें जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। Right. True. True. So, what were the challenges involved in this journey so far? जब आपने सेहत कहानी को शुरू किया और अब आप अपनी जर्नी को आज देखती हैं from the start till present and looking to the future, what were the challenges involved and how you overcame those? So, I think एक तो फीमेल फाउंडर होना, when you're two female founders, so I think ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि एंड हाउ, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उस वक्त से अब में डिफरेंस ये है कि आई थिंक विद एज एंड विद एक्सपीरियंस पीपल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली, बट व्हेन वी स्टार्टेड द जर्नी वी बोथ वर वेरी यंग. So I think it took us quite some time in really proving ourselves, and I think मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल फाउंडर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है in order to really prove themselves. Funding is a challenge.
funding is a challenge being a female founder, but funding in healthcare itself is also a challenge. So I think in the last few years we've seen a lot of funding happen in, for example, fintech, in e-commerce, but I think healthcare में funding बड़ी limited रही है. तो ये एक बड़ा True. चैलेंज है जिसे हमें केटर करना पड़ता है. तो ये एक चैलेंज है. आई थिंक तीसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली इवन इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, हेल्थ पे स्पेंडिंग बड़ी कम है हमारे मुल्क में. So it's Right. a very small percentage of the GDP which is even spent on healthcare. So I just feel the gaps are really immense, and it's such an important need. But I think as we are progressing, अच्छी चीज़ ये है कि इदारों को इस चीज़ की समझ में आ रही है, whether it's government, whether it's private institutes, now they are understanding. They are moving towards creating more opportunities, more synergies. And I think एक अच्छी opportunity जो अब मुझे नज़र आती है, public private partnerships काफ़ी हद तक funding के gap को solve कर सकती हैं. Right. So, what would be your one advice for young entrepreneurs and especially female entrepreneurs, that how should they overcome all the challenges, and what challenges you faced as a female only? Yeah, I think I would just say that hang in there. Things do get better, but you have to be very resilient. So I think one thing that I really want to share with all the young females, particularly is that you have to be really strong. Right. Um, Create a network of friends or supporters who you feel can really help reach your next level. और खुद अपनी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ ज़रूरी है कि आप अपनी खुद बहुत सपोर्ट बने. क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आई थिंक एक फीमेल्स का एक नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम हैव दिस फीलिंग कि अच्छा अगर हमें ये रोड क्रॉस करनी है, कोई हमारी उंगली पकड़ के रोड क्रॉस करा दे, उसके बाद वील विल गो ऑन आवर ओन. समटाइम्स यू मे नॉट हैव एनीवन टू बी दैट सपोर्ट, स्पेशली इन द इनिशियल पार्ट्स ऑफ योर जर्नी. जब आप कामयाब होते हैं तब तो बहुत लोग आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज़ शुरू कर रहे होते हैं उस वक्त you have to be really a big advocate of your own work and yourself, and create opportunities for yourself. For example, अपना support system बनाएं. We all have families, children to look after, so create a network around you. Maybe get good employees, get people to look after your home when you're at work. लेकिन हो सब जाता है, पर आपको अपने अंदर बहुत Right. स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है कि मैं ये सब कर सकती हूँ. क्रिएट वर्क लाइफ बैलेंस कि अच्छा ठीक है, इतना टाइम हम घर को देंगे, इतना टाइम ऑफिस को देंगे. आई थिंक फॉर आवर सोसाइटी ऑल ऑफ दिस इज वेरी मच नीडेड. Right. What keeps you motivated, Iffat, in all this? Yeah, I think that one patient who got access to a doctor, that one person who we were able to send to a hospital in time, if we were able to save a life. I think all of these stories, that one doctor who wasn't able to work, but क्योंकि अब सेहत कहानी और वो सेहत कहानी पे काम कर रही हैं. So all of these stories, really This keep me is motivated every day. Yeah. wonderful, wonderful. तो आपने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, मैं इसे और डिटेल में चाहूँगी कि आप कवर करें एज अ फीमेल, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ यू कीप दैट? Yeah, I think so. One thing which is always a good opportunity when you're an entrepreneur is you're running your own show. So you keep your own timings, and then you can really manage things. So I think one thing that I do is एक तो time का पाबंदी बड़ी ज़रूरी है. So both me and Sarah, what we do is that we work strictly 9 to 5. But then that Right. means that we are up and we are in office and we are taking meetings from 8 or 9 a.m. And at times we do find it challenging कि बहुत सारे लोग time की पाबंदी नहीं करते, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें सारा अपना काम विद इन दिस टाइम कंप्लीट करना है. Right. वी ट्राई कि हम 5 बजे ऑफिस से उठ जाएं, फिर अगर कोई काम पेंडिंग में है, कोई चीज़ रह गई है, वो हम फिर घर जाके पूरा करें या घर जाके बनाएं. Right. दैट्स समथिंग दैट वी ऑलवेज वेरी प्रैक्टिकली डू कि अच्छा ठीक है, अब इसके बाद कुछ अगर करना है तो वो वर्क फ्रॉम होम कर लें. लेट ना, आई एम अ नाइट पर्सन, सो मुझे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो रात में बैठ के करूँ when my daughters have slept. But I think we take one day at a time. I try to take one day at a time. कि अच्छा यार आज ऑफिस में बड़ा अच्छा दिन गुजरा, maybe I wasn't able to be there with my daughters, but then एक दिन I will be just there with my daughters. So I think making sure that you take one day at a time. Planning is very important. So सुबह से आप plan करना शुरू करते हैं, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे. I think as I have started to plan things, I think I've become a much more balanced person in terms of that work-life balance. Right. Right.
So, how you keep yourself updated and learn it throughout this journey? What is coming next? I think self learning is very important. You need to constantly keep yourself and your information updated. So participating accelerators, mentorship programs, finding the right mentors who can really guide you, train you, educate you. I think that's very important. So I think that in my journey, that's what I've done. That I keep myself up to date by speaking to a lot of mentors who can really constantly guide you. So I think learning a constant process है, reading books. आई थिंक इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सब लर्निंग करने के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि कीप ऑन आइडेंटिफाइंग योर ओन गैप्स कि यार ये चीज़ मेरे अंदर कम है और मुझे इस Hmm. चीज़ पर काम करना है और इस चीज़ पे मैं फिर काम करने की यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एवेन्यूज सो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है इन योर लर्निंग कर्व बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सी एक्सो फोरम पे बात कर रहे हैं, तो आपकी ओपिनियन में सी एक्सो ग्लोबल फोरम और इस तरह के फोरम्स की क्या यूटिलिटी है, एंड हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन आई रीशेपिंग? थिंक I think सबसे important चीज़ तो ये है कि they give an opportunity and a platform to founders like me to really talk about our work. It really give us an outlet that we can, teach people or talk about, for example, things which were our challenges. ताकि कल को if someone else is building a company, they can, know who to reach out to. And I think सबसे important चीज़ ये होती है building this network. I think for an entrepreneur, whether it's in Pakistan or anywhere in the world, I think a network is very important, which CxO Global Forum has very successfully, started to create. And not just that, I think you do a lot of meetups and you're really creating that space where you get to meet so many people. So I think that learning curve, especially for the young upcoming entrepreneurs, is very important. Okay, they get to meet so many mentors, so many people who have, done successes, failures. Even you learn from all of that, whether it's a successful story or a failure, but you keep on learning. Yeah. So I think that that's an amazing job that you all are doing. Thank you so much for your generous words, Dr. Iffat. And thank you so much for your very valuable time today. We had a great conversation. We had great insights from this whole conversation. And I hope our audience had the same. So I once again thank you for being here with us today. Thank you so much, audience, for being here with Thank us today. I'll catch you with more shows in future. Keep following us at www.cxo.global. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz. you. Allah Hafiz.